Good morning. Welcome to Sanjay Godawat IIT Medical Academy. This is Subramaniam, Zoology faculty. Today, we are going to discuss another phylum of animal kingdom, that is Mollusca. Let us see the characters. What are they given here? Actually, Mollusca बोले तो इधर मीनिंग क्या है बोले तो सॉफ्ट नट mollusk बोले तो सॉफ्ट नट्स ओके क्यों ऐसा सॉफ्ट नट बोले तो इधर बॉडी विल बी स्लाइमी वेरी डेलिकेट दैट विल बी कवर्ड विथ विच वन वेरी हार्ड शेल सो जस्ट लाइक अक्रोट्स जैसा होते वैसे भी इधर ओके आउटसाइड है तो हार्ड शेल है इनसाइड so soft body will be present, slimy soft body. That's why these all are called as a molluscans. This is the second largest phylum. First largest phylum अभी previously complete किया हमने. So that is nothing but which one phylum? Arthropoda is the largest phylum, and the next one is second largest phylum. It is mollusca. Mollusca are terrestrial. They are present on land. Aquatic, they are able to live in water. The two marine habitat or freshwater habitat may be hote, having an organ system level of organization as usual. This is there is no specific in this one, and bilaterally symmetrical organisms. Here thoda sa remember karna ye. So molluscans during the larval stages, these are bilateral symmetrical, and gastropods में this is gastropoda क्या है बोले तो under this phylum classes will be there, that is a gastropoda. In this gastropods also larval stages are bilateral symmetrical, but adults by a process that is called as a torsion बोलते. So इधर देखो line जो हम mention किया ना dark color में, that is green color में. So this will be going to कैसे अभी straight है, बाद में इधर it was going to turns around बोले तो it will be 180 नहीं तो 360 degree angle. So ये organisms में shell में organs will be spirally arranged, आधा round नहीं तो one round, more than one round. Due to that spiral arrangement of the internal organs, they are going to lose their symmetry. This process is known as torsion बोलते. Torsion ये process को बोलते torsion. During the embryonic development, the larval stages shows the bilateral symmetry, and later they are undergoes the process that is called as torsion. So then by that they becomes asymmetrical, that is in gastropodons में वैसा होते. गैस्ट्रोपोडा में ये टॉर्शियन प्रोसेस की वजह से दे बिकम्स लाइक asymmetrical. ओके जनरली दैट इज बायलैटरल सिमेट्रिकल मेंशन किया. एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ये as usual normal character, and coelomates also this is okay. So इधर हम remember करना ही these are bilateral symmetrical in generally NCERT में mention किया, but exceptional points है larval stages है तो bilateral symmetrical, but gastropodons में snails में due to torsion process during the embryonic development they becomes asymmetrical during the adult process, adult organisms. Okay, so bilateral symmetrical gastropods, secondarily asymmetrical. So bilateral symmetrical gastropods, secondarily बोले तो bilateral symmetrical, this is larva. Secondarily बोले तो कौन सा adults becomes asymmetrical due to the process that is called as a torsion occurs during their development, embryonic development. ये points थोड़ा सा remember करना ही NCERT में नहीं है. Okay. Next one, body is covered by calcareous shell. Body is covered by calcareous shell. So this is calcareous shell बोलते. Outside here light color में, white color में mention किया ना, outside. This is ये calcareous shell बोलते.
कैलकेरियस शेल, वेरी हार्ड इट इज, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में होते, उसको शंक बोलते, ओके, बाइवाल्व्स, सो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में उसका शेप एंड डिजाइंस एंड नेक्स्ट वन उसका कलर्स पूरा चेंज हो जाएगा, ओके। बॉडी इज कवर्ड बाय calcareous shell, it is made up of calcium carbonate and is unsegmented, their body is unsegmented, it is with a distinct head region, muscular foot and visceral hump, three parts are present, उसमें first head region, so ये head region होते, नेक्स्ट वन इज मस्कुलर हम्प, ये पूरा ये इंटरनल ऑर्गन्स जो है ना ये पूरा मस्कुलर हम्प बोलते, एंड नेक्स्ट वन इज दिस इज मस्कुलर फुट, सो इधर मसल्स भी होते, डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज होते, दैट इज द विजरल मास और विजरल हम्प इट इज, एंड ये फुट इज देयर नो, दैट इज मेड अप ऑफ मसल्स, ओके। सो ऐसा तीन पार्ट्स, हेड एंड नेक्स्ट वन विजरल हम्प, डिफरेंट विजरा बोले तो इंटरनल ऑर्गन्स, ये ऑर्गन्स टोटली फॉर्म्स एज ए विजरल मास और विजरल हम्प, ये हम्प क्यों बोल रहा है बोले तो कैमल का, बफेलोस का, तो बफेलोस का है तो ज़्यादा नहीं होते, व्हेन वी आर ऑब्जर्व्स दैट ये बुल्स बैक साइड हम्प होते कैमल में, सो वैसे ही इधर एक बल्जड स्ट्रक्चर बम्प विल बी गोइंग टू फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ दीज इंटरनल ऑर्गन्स, इसलिए इसको बोलते विजरल हम्प और विजरल मास, एंड नेक्स्ट वन इज मस्कुलर फुट विल बी प्रेजेंट, स्नेल्स, तो मोस्ट ऑफ द molluscans having this type of body division. Next one, a soft and spongy layer of skin forms a mantle. Mantle. So mantle बोले तो इधर देखो, this is only mantle. So this mantle ये इधर पर्पल कलर में है ना, नहीं तो ब्लू कलर में. So this is present in between the shell and internal organs. A velvet cloth-like structure which will be protects the internal organs. Okay. ये mantle only. And with the other tissues, it will be secretes the shell, calcareous shell it is, okay. It is a spongy layer of skin over the visceral hump to protect the internal organs from the hard and pointed shell. Mantle is a new word for you. Next, a space between the hump and the mantle, a space between the hump and mantle. So इधर है तो इसको बोलते mantle, ओके, एंड हियर शेल इज प्रेजेंट, हम्प का नेक्स्ट ये हम्प बोले तो पूरा इंटरनल ऑर्गन्स एंड मैंटल, इधर मैंटल कैविटी ये बोलते मैंटल कैविटी, हियर इट इज मैंटल कैविटी, ओके। सो ये मैंटल कैविटी में विच वन, सो फेदर लाइक गिल्स दैट इज कॉल्ड एज अ टिनिडिया इज प्रेजेंट, फेदर लाइक गिल दैट इज अ टिनिडिया, सो विच विल बी हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन के लिए, दोनों के लिए। जनरली गिल्स बोले तो हमको पता है दोज आर हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन, बट इन दिस ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन के साथ साथ गिल्स आर पार्टिसिपेट इन द एक्सक्रीशन आल्सो, ओके। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा। सो what is that? Here it is, we have to remember space between the mantle and hump. So this is mantle and entire internal organs, here it is clearly मेंशन किया मैंटल कैविटी, ये मैंटल कैविटी में, ओके, पूरा मैंटल कैविटी में कौन सा ये फेदर लाइक गिल्स है तो नहीं होते, ये इधर एंटीरियर ये पोर्शन है तो पोस्टीरियर पोर्शन में, इधर मैंटल कैविटी, इसमें ये फेदर लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, दिस इज ओनली कॉल्ड एज अ टिनिडिया, feather like gills, they will be helps in the respiration as well as excretion, okay. Generally ये point क्यों stress कर रहा है बोले तो generally gills are helps for the exchange of gases, that is breathing or respiration, but here these gills are helps for the respiration as well as excretion also, okay. Next one, the anterior head region has sensory tentacles, इधर head region anteriorly, head will be anteriorly, hence sensory tentacles are present here, sensory tentacles and on the surface of that eye stalks, this is the eye stalks will be present, ये eye stalks होते इधर edge में। नेक्स्ट वन ये सेंसरी टेंटकल्स भी प्रेजेंट, बोथ आर प्रेजेंट, इधर भी सेंसरी टेंटकल्स, आई स्टॉक्स के बीच एड्ज में आइस विल बी प्रेजेंट, हियर आइस विल बी आई स्टॉक्स प्लस टेंटकल्स, बोथ आर प्रेजेंट। नेक्स्ट वन,
mouth contains a file-like rasping organ. File-like rasping organ. File-like बोले तो it will be very pointed, sharp structure, and rasping, which will be very hard, rough surface होते. So this is only called as a radula. Radula is present in these molluscans. दूसरा ऑर्गेनिजम्स में नहीं होते. मोलस्कन्स में भी बाइवॉल्व्स में ऑयस्टर्स है ना, उसमें नहीं होते. ओके, सो रिमेनिंग स्नेल्स में दिस इज प्रेजेंट इन द बकल चेंबर. इधर भी मेंशन किया देखो. सो दिस इज okay, rasping organ, pointed small teeth like structures are present in this along the total surface of radula. They contains the minute teeth like structure, rough surface. With the help of that, it will be cut the food materials, chopping of food materials. So this is a radula. ये point भी important है. Radula is a file-like rasping organ which helps for the chopping of the food materials, which is present in the buccal cavity or buccal chamber of these molluscans. And one more thing, head region contains the eye stalks plus which one, sensory tentacles also present. Next one, they are usually dioecious. Both males and females are separate. Oviparous means egg-laying organisms. Indirect development. Indirect development, a larval form, that is trochophore larva. Examples. Pila. This is known as apple snail. Apple shape में, so apple snail. Next one, Pinctada. Pinctada vulgaris, Paul oysters. These are called as a bivalves. क्यों bivalves बोले तो इधर एक shell, दूसरा shell. They are going to attached with the muscles here it is. कोई substance उसका shells के बीच में चले गया, then it will be considered as a foreign body and it will be going to kill these oysters. Then oysters, to kill that, they are secretes the paste-like, gel-like matter around that. It is distributed around that, and that is only future में form हो जाएगा poles-like. Within months, it will be forms like a hard pole like होते. Different variety of poles, generally cream color में होते. So these are pole oysters, Pinctada vulgaris, and this is the Pila apple snails. General names important here. Match the following के लिए पूछ सकते. Next one, Cephia. This is known as a cuttlefish, false fishes it is. Cuttlefish, devilfish, silverfish. Okay, so ये पूरा false fishes है. Next one, Loligo. This is a squid. Okay, giant squid is Archaeoteuthis. इसका length 20 meters more than that it is. Okay, so along with this tentacles, इसको क्या है ये head region के surrounding suckers का tentacles वगैरह arms will be present. Next one, octopus. It is known as devil fish. ये भी false fish है. So इसका octopus क्यों बोलते? Octa बोले तो 8 foot like structures are present, long they are, and they contains the sucker like structures. These are helps to capture the prey and locomotion के लिए, grip के लिए use करते. Afflicia बोले तो sea hair. इसका shape just like hair का to rabbit का जो है ना hairs. So ये पूरा remaining structure is like hair. That's why it is called as a sea hairs. Next, Tentalium. इसको बोलते टस्क शेल. टस्क बोले तो एलिफेंट का टीथ होते हैं ना, वैसा शेप में होते हैं. इसका पूरा शेल, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म होगा. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज टस्क शेल्स. कीटोप्लूरा, chiton. It contains the 8 chitinous plates on its surface. Okay, chiton. Next one, Phylum Mollusca, divided into classes. Those are Aplacophora, Polyplacophora, Monoflacophora, Gastropoda, Scapopoda, Pelicipoda, and Cephalopoda. Okay, so these are the number of classes. How many totally here? 7 classes are present under this Phylum Mollusca. Next, first question beta, questions को देखो. A mollusk is not a shootable animal to observe. Means molluscans में कौन सा character is not belongs to, वो हम observe नहीं कर सकते. So which character is not belongs to molluscans? Head is present in these organisms. Segmentation नहीं होते ये organisms में, and muscular foot is present. And next one is so visceral hump also present. Now
विच ऑप्शन इज नॉट सुटेबल फॉर दिस वन, हम मोलस्कन्स में ऑब्जर्व नहीं कर सकते बोले तो दैट इज अ सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन नहीं होते, सेगमेंटेशन वी कैन ऑब्जर्व इन एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कार्डेट्स में भी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी द क्वेश्चन. विसरल हम्प, विसरल हम्प, विसरल हम्प इन मोलस्कन्स इज कवर्ड बाय, विसरल हम्प, सो ये विसरल हम्प बोलते हैं ना, सो इधर हेड होते, सो दिस इज फुट, सो ये विसरल हम्प इज कवर्ड बाय आउटसाइड कौन सा, दिस इज शेल, calcareous shell will be present in these organisms. So विसरल हम्प इज कवर्ड बाय फुट नहीं है, रेड्यूला ये बकल चैम्बर में होते, मैंटिल एंड काइटनस सेल, सो काइटनस सेल भी कवर होगा and next one is a mantle also will be covers this one. So but visceral hump को exactly directly cover कौन सा होते, that is a mantle, mantle के ऊपर chitinous shell होते. So इधर क्या mention किया, visceral hump is in molluscans is covered by that is a mantle. Okay, so mantle के ऊपर hard जो है ना that is chitinous shell. So here correct option is a mantle होगा. नेक्स्ट वन, rasping organ in snails. अभी हम देखा ना rasping organ, file like rasping organ, pointed and hard structure, it is known as radula. Directly we can see this one. Aristotle lanthorn in echinodermate में ये mouth में होते, mandibles ये arthropods में and other some insects, okay, particularly, so they contains the mouth parts, very hard to cut the food materials. Osphradium बोलते, Osphradium बोले तो क्या है, ये mantle cavity जो है ना, इधर mantle cavity, okay, ये mantle cavity में इधर feather like गिल है ना, so इसके नीचे इधर एक sensory structure called as a ओस्प्रेडियम, ओस्प्रेडियम बोलते इसको, इसका फंक्शन क्या है बोले तो दिस इज ए सेंसरी स्ट्रक्चर विच विल बी टेस्ट द प्यूरिटी ऑफ वाटर, प्यूरिटी ऑफ वाटर को आइडेंटिफाई करने के लिए ये यूज होगा. सो इन ये वाटर स्नेल इज प्रेजेंट, देन वो वाटर को हम पी सकते, ओके, क्योंकि स्नेल्स आर एक्ट्स लाइक ए वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर्स. ओके, सो कोई वाटर में उतना पोल्यूटेंट्स नहीं है, so that will be less pH, suitable to drinking, then that water में ये organisms will be going to survive. Osphradium will be test that purity of water. कोई impurities है तो वो उधर पानी में नहीं रहते, उधर से भाग जाते. Okay, that is the which one, Osphradium. Now correct option is the radula. Gills in molluscans, so performs the respiration as well as the excretion. So this is only correct option. Next one, are highly advanced teeth. Teeth नहीं है, इसमें teeth नहीं होते, radula only it is. Next one, are present outside of the mantle. नहीं है, mantle cavity में ही रहते. So has no role in the oxygen, okay, oxygenation of food. So that is respiration में role है इसका, exchange of gases को करते. So first option only correct. Next one, assertion reasoning type of question. First assertion is gills of molluscans are located in a mantle cavity. So this is correct only. Next one, they can exchange respiratory gases from the water that circulates in the mantle cavity. So correct only, correct explanation. That is first option correct हो जाएगा. Okay. फंक्शन मेंशन किया ना, इसलिए करेक्ट हो सकते. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2. पाइला, एक्टोपस, पिंकटाडा एंड अफ्लिशिया. इधर क्या मेंशन किया, डेविल फिश, पर्ल आइस्टो, सी हेयर एंड एप्पल स्नेल. मीन्स हियर साइंटिफिक नेम दे दिया, इधर जनरल नेम्स दे दिया, हम इसको मैच करना है. पहला पहला बोले तो कौन सा, एप्पल स्नेल. सो फोर्थ वन, ये फोर्थ. नेक्स्ट वन, ये फोर्थ बोले तो कौन सा ऑप्शन, यस 2 ऑप्शंस है, 2 and 4. नेक्स्ट वन इज देयर ऑक्टोपस. ऑक्टोपस कौन सा, ऑक्टोपस बोले तो डेविल फिश. ओके, सो B1, सो B1. नेक्स्ट वन सी, पिंकटाडा वल्गारिस, पर्ल आइस्टर, C2. सो C2 बोले तो कौन सा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, थैंक यू सो मच.